Very good morning, my dear students of class 8th. Student, today in this video, we will talk about sexual reproduction in plant. Okay? The plants that have flowers are called flowering plants. बच्चों, जिन पौधों में flowers होते हैं, उन्हें हम flowering plants कहते हैं. Most of the flowering plants reproduce by sexual reproduction method. Okay? और जितने ज़्यादातर जो flowering plants होते हैं, they reproduce in a sexual way. Okay? They follow sexual reproduction method. In this method, there is an involvement of male and female organs or gametes. Okay, students, I hope you are understanding what is the meaning of sexual reproduction. Sexual reproduction is a reproduction in which male and female gametes involved. Okay, means वो रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गन या गैमेट्स की आवश्यकता होती है उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. Let us understand the structure and various part of flower. Student, flower, the reproductive part. Okay, flower contain the sexual reproductive organ of a plant. Student, flower is very important part of plant because it is also called reproductive part because it contain sexual reproductive organ. In most of the plants, the same flower contain the male organ as well as the female organ. Student, मोस्ट ऑफ द प्लांट हम देखते हैं कि सेम फ्लावर कंटेन द मेल ऑर्गन एज वेल एज फीमेल. एक ही फ्लावर में हम मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन भी देखते हैं. द फंक्शन ऑफ फ्लावर इज टू मेक मेल एंड फीमेल गैमेट. बच्चों, जो फ्लावर होता है उसका जो मेन फंक्शन होता है इज टू मेक मेल एंड फीमेल गैमेट. उनका मकसद है मेल और फीमेल गैमेट को बनाना एंड टू इंश्योर दैट फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस. और ये श्योर करना कि फर्टिलाइजेशन हो एंड टू मेक सीड फॉर ग्रोइंग न्यू प्लांट. तो बच्चों, फ्लावर का जो मेन फंक्शन है वो है टू मेक मेल एंड फीमेल गैमेट एंड उनके बाद मेल एंड फीमेल गैमेट व्हेन फ्यूज विद ईच अदर, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड्स मेक एंड grow into new plant. This is called fertilization. So it is the main function of flower. In other words, flowers perform the function of reproduction in plants. We can say in other word that flower perform the function of reproduction in plant. Flower are present for reproduction, okay, by producing seeds for the plant. Okay, without seeds we cannot see new plant in our nature, okay, because most of the plant grow by seeds. That's why. Thus, flowers are for sexual reproduction in plant. So we can say flowers are the reproductive parts of plant. Now, student, we will talk about floral part of a flower. Okay, a typical flower has four major parts arranged in rings or rows: calyx, corolla, androecium, and gynoecium. The rows are arranged on a fleshy base called receptacle. Okay, student. So it is saying जो फ्लावर होता है उसके चार पार्ट्स होते हैं. दे हैव फोर मेजर पार्ट्स जो कि एक रोल में अरेंज होते हैं: कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. ओके, एंड ये जितने भी बच्चों रोल्स होते हैं आर अरेंज्ड ऑन अ फ्लैसी बेस. एक मांसल बेस में ये अरेंज होते हैं जिसे हम रिसेप्टिकल कहते हैं. सो यू कैन सी इन दिस डायग्राम क्लियरली दैट it's a structure of flower, student. Parts of flower you can say. Okay, we will discuss about this all part. Each of these part has specific role to play. Okay बच्चों, इनका प्रत्येक जो पार्ट है इनका एक कोई ना कोई स्पेशल रोल है. Some flowers may or may not contain one or more of the parts. कुछ फ्लावर्स में इनमें से कुछ पार्ट्स नहीं होते हैं. हालांकि हाउएवर द सेम फंक्शन मे बी डन बाय सम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. लेकिन फंक्शन अधिकतर सभी फ्लावर्स के एक जैसे ही होते हैं. जो इंपॉर्टेंट उसके पार्ट्स होते हैं उन सब का फंक्शन एक जैसा ही सभी फ्लावर्स में देखने को मिलता है. नाउ द फर्स्ट पार्ट इज कैलिक्स. द green leaf-like part of outermost circle of flower are called sepals. Student, let me show you. You can see here this part which is green. You can read it here, sepals. Okay, student, you can see this. This is a leaf-like structure. This is called sepals. Okay. So let's read about it more. So these are called sepals. All the sepals taken together are called calyx. और बच्चों ये सारे जो sepals होते हैं मिलकर calyx पहला जो फर्स्ट रोल है, फर्स्ट
रोल है जो फ्लावर का वो इनसे बनता है। सो सारे सेपल्स मिलकर कैलिक्स बनाते हैं। इन सम फ्लावर, कुछ कुछ फूलों में द सेपल्स मे बी डिफरेंटली कलर्ड, कुछ कुछ पौधों में हम अलग अलग कलर भी सेपल्स का देखते हैं बच्चों। मोस्टली ग्रीन sepals are green, but in some flower we see different kind of color of sepals. The sepals cover and protect the inner part of flower. Now let's talk about its function. The function of sepals is to cover and protect the inner part. इनर पार्ट को कवर करना, इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करना फ्लावर के। ओके, इन द बर्ड स्टेज। कब? बर्ड स्टेज, जब बडिंग होती है उस स्टेज में सेपल्स इनर पार्ट को कवर करता है और प्रोटेक्ट करता है। सो इट इज द फर्स्ट पार्ट, कैलिक्स, फर्स्ट रोल। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड रोल, corolla. This is the second roll of the flower and is made of brightly colored petal. Okay, let me show you petals. This one you can see here, red in color. Okay, these are very broad part, you can see petal. So this is called petal, okay, which is in red color. You can see clearly here, it is called petals. It's the most attractive part of flower. Okay student, let's talk about it. The petals lie inside the sepals. Okay, जो petals होते हैं वो sepals के inside, मतलब अंदर की ओर होते हैं। All the petal taken together are corolla. सभी petals मिलकर corolla रोल बनाते हैं। Okay student, सेकेंड रोल जो बनता है वो petal से मिलकर बनता है। So we can say that calyx, the calyx part is made up by sepals and corolla is made up by petals. The petals are usually scented. Okay, सुगंधित होते हैं। The function of petal is to attract insect. इनका जो मेन फंक्शन है वो है इंसेक्ट, कीट को अट्रैक्ट करना फॉर पॉलिनेशन, ताकि वो पॉलिनेशन, परागण करे, एंड टू प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रोटेक्ट करे, विच आर एट द सेंटर ऑफ द फ्लावर, जो कि फ्लावर के सेंटर में मौजूद होते हैं। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ petals. Okay student, so petals are scented, so their main function is to attract insect for pollination and to protect the reproductive organ which are at the center of flower. Okay student, now the first part is means the reproductive. If we go to the reproductive part of the flower, we will go androecium. This is the androecium. This is the male reproductive part of flower and is made up of stamens. Okay, let me show you. Student, you can see here stamen. Clearly you can see stamen. It's called a male part of flower. Okay, it is male part of flower, stamen. You can see more than one stamen in flower. Okay, mostly if you see flower, you will see more than one stamen. Okay, so you can see this one. This stamen is the male part of flower. Okay, so it is made up by stamen, the male reproductive part. A stamen is made up of long slender filament and a broad anther at the tip. Okay student, if you see its structure, you will see long slender filament and a broad anther at the top. Okay, let me show you filament and anther. You can see here this tube like structure is called filament and this broad part is called anther. Okay student, you can see here this broad part. In all stamens you can see two part, the tube like structure and broad part. The tube like structure is called filament and broad is anther. Okay, so this is the structure of stamen. Stamen made up of two part. Okay, anther and filament. Anther is very important part. This anther contains several pollen grains. And student, ये जो broad part anther होता है इसके अंदर pollen grains होते हैं, पराग कण होते हैं. Okay, that are in a form of yellowish powdery substance, जो कि एक पीले पीले पाउडर के तत्व के रूप में मौजूद होते हैं. Pollen grains contain the male gamete. And student, pollen grain is very important part because they contain the male gamete. They contain male gametes. Okay, nucleus ये यहाँ पर मौजूद रखते हैं. That's why male gamete. And we are talking about fusion of male and female gamete. Sexual reproduction की हम यहाँ पे बात करें. So without male gamete and female gamete, sexual reproduction process cannot take place. So now we have got male gamete. Next talk about gynoecium. Okay, this is the female reproductive part of flower and is the innermost roll. Okay, it is the innermost, सबसे अंदरूनी अगर कोई हिस्सा है फ्लावर का तो वो है बच्चों gynoecium. Okay, you can see here this is gynoecium. You can see here this long structure gynoecium. So this is called gynoecium and it is the female reproductive part and it is the innermost roll and it consists of pistil. Okay student, it consists of pistil or carpels.
Each pistil is made up of an enlarged ovary at the base, a long slender style, and a broad stigma at the tip. Student, let me show you the structure of pistil. Okay, gynoecium is the female reproductive part which is made up of by pistil. And if you see the pistil structure, so you can see, let me show you this first part. You can see this first part is a mouth. It's a mouth of pistil. It's called stigma. Okay, stigma. And this one is the tube-like structure, neck-like structure. This is called style. Inside it there is a tube. Okay, to carry the pollen grains from stigma to ovule in the ovary, and this broad part, this is called ovary. Okay student, it is called ovary, and inside the ovary you can see the seed like structure. These are called ovules. Okay, so this is structure of pistil. Okay, and this pistil is made up of by three part. Okay, and this pistil makes gynoecium, female reproductive part of flower. Each pistil is made up of enlargement ovary at the base, a long slender style, and a broad stigma at the tip. Stigma, style, and ovary are collectively termed as carpel. Okay स्टूडेंट, हम इनको तीनों को, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को मिलाकर हम इसको एक नाम देते हैं, वो है कार्पल. द स्टिग्मा इज स्टिकी इन नेचर. वो स्टिकी होता है. स्टिग्मा जो मैंने अभी आपको माउथ दिखाया था स्टूडेंट, दिस वन, द माउथ ऑफ पिस्टिल, यू कैन सी हियर, इट इज़ वेरी स्टिकी. ओके, ये स्टिकी होता है, चिपचिपापन इसके अंदर मौजूद होता है, विच इज बेसिकली टू अटैच द पॉलन डिस्पर्ज इन एयर. सो वो पॉलन जो हवा में डिस्पर्ज है बच्चों, उनको अटैच करने के लिए ये होता है. इसलिए स्टिग्मा स्टिकी होता है, ताकि ये हवा में मौजूद जो पॉलन्स हैं उनको अटैच कर सके. द स्टाइल इज अ ट्यूब. स्टाइल जो मैंने बताया, इट्स अ ट्यूब. वो ट्यूब होती है दैट लीड फ्रॉम द स्टिग्मा टू द ओवरी. वो ट्यूब ये लीड करती है, ये पहुंचती है स्टिग्मा से ओवरी तक. ओके, एंड हेल्प इन पैसेज ऑफ द पॉलन इन द ओवरी. और पॉलन ग्रेन्स की मदद करती है ओवरी तक पहुंचाने में. ओके, एंड द ओव्यूल कंटेन द फीमेल गैमेट. एंड स्टूडेंट, द ओव्यूल दैट वी टॉक्ड अबाउट here, you can see this ovary, and inside the ovary there are ovules. They contain female gamete. Okay student, so the ovule contain the female gamete that develop into seeds, and these are the ovules which develop into seeds after fertilization. What is fertilization? The fusion of male and female gamete and make a new cell called zygote. This is called fertilization. Ovary is the solan part of the style. Okay, we can see the flower consists of ovule, which are the female gametes. Student, the ovary consists of ovule, you can see, and which are the female gamete. This ovary, if you see the ovary, this broad part, it contains ovule, and this ovule is the important part because it contains female gamete. Okay, and this female gamete fuse with male gamete, or you can say male gamete fuse with female gamete and form a new cell. This is called zygote, and fertilization take place, and that's how sexual reproduction takes place in plant. Okay students, so it was about the flower. So in this video we talked about the important reproductive part of flower. This is called flower, and different parts we have also discussed here, like 4 rows we discussed: calyx, corolla, endoecium, gynoecium we talked about here. Okay, and important part we discussed, that is flower, and flower is the reproductive part. Okay student, because it contains reproductive organs in it, that's why. Okay, so it was about sexual reproduction in plant. So student, the overall we have understood after this video that the sexual reproduction in plant will take place in the presence of flower. Okay, all flowering plants perform sexual reproduction. Okay, so I hope you must have understood the structure of flower. Okay student, so it's enough in this video. Thank you, have a good day.